students, how are you all? Hope you all are fit and healthy. Students, I am your English teacher Urmil ma'am from Ardent Progressive School, Lamachor. So students, today I am starting a new chapter, that is noun numbers. Numbers, you all know, we use to count anything. We use to count anything. हम किसी भी चीज को गिनने के लिए numbers का use करते हैं. So if we are using numbers to count a noun, that are of two kinds. दो प्रकार से हम use करते हैं. When a noun refers to one, जब एक noun एक को refer करता है, एक के बारे में बताता है, then it is called a singular number. When a noun refers to more than one, then it will be plural. So with some example, I am telling you about the singular and plural numbers. Here I am showing you one thing. What is this? This is a key. ये क्या है? एक चाबी है. If we are talking about one key, then it will be singular. ये क्या होगा? Singular होगा. And it is a noun also because it is a name of a thing. ये क्या है? एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये noun है and it is referring to one. ये एक को refer कर रहा है, that's why it is singular. If there will be more than one, जब यहाँ एक से ज्यादा की होंगी तो what will happen? This will be plural. ये क्या हो जाएगा यहाँ? Plural. And you will write and you will say keys. आप क्या कहेंगे यहाँ? Keys. So this one is singular and now it will plural. अब ये क्या हो जाएगा? Plural हो जाएगा. When we are talking about one, it will be singular, and if we will talk about more than one, that will be plural. One more example I am showing you. This is a doll. So one doll is here and a noun refers to one. If we will talk about more than one, अब ये एक से ज़्यादा है, so what we will say? We will say dolls. So again it will be plural dolls. One more example I am showing you to clear you about singular and plural. Here is one pen. I am having one pen. One refers to singular pen. And now here are more than one pen. एक से ज़्यादा पेन है, then what we will say? Pens. What we will say? Pens. So pens will be plural here. So when noun refers to one, that will be singular, and if it will refers to more than one, then plural will be there. तो नाउन जब एक होगा तब हम सिंगुलर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, और जब मोर देन वन, एक से अधिक होंगे तो हम उसे बहुवचन कहते हैं. मोर देन वन प्लूरल एंड वन फॉर सिंगुलर. नाउ हियर आर सम रूल्स. I want to tell you that how you will make plural from a singular one. कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे. So here are some rules to make singular to plural. Simply adding s. Now some nouns we can make plural just simply adding s. केवल हम s का यूज करके हम वर्ड्स में, नाउन्स में उनको हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं. Like for example, pencil. Here I have written some examples. Pencil. So what you will say in plural? Pencils. Just by adding s. Book, you can add s at last. आप लास्ट में s ऐड करेंगे. Books, then it will be plural. Doctor, doctors. So we will just simply add s at last of the noun.
Second rule is, if the noun ends ch, sh, ss, o, x and z, अगर nouns में लास्ट में जब वो एंड होता है वर्ड ch आता है या sh आता है, ss आता है, o, z और x आता है, then what you will do, you will just add es at last. तो आप लास्ट में es ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बज, BUZZ. नाउ बज, डबल z इज हियर, सो व्हाट यू विल डू, बज का क्या हो जाएगा, buzzes, es. वॉच, ch is here at last, watches. bush, bushes. You will just add es at last. Third is why. If the word is ending in y, लास्ट में अगर y है किसी नाउन के वर्ड में, नाउन में, सो और उसके आफ्टर है कॉन्सोनेंट और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है. y कहाँ है, लास्ट में है, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स यू ऑल नो. सो इफ b, c, d consonants will be there before noun, before y, so what you will do, you will just add I, es. You will add I or es to make plural. तो आप प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, IES ऐड करेंगे. लाइक बेबी, सो हेयर y is the last letter here and just before y b consonant is there. So what you will do, you will just remove y from here and you will add IES. आप y की जगह I और प्लूरल बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, es को ऐड करेंगे. Like fly, y you will remove here and you will add IES to make plural. In fairy also what you will do, just remove y and you will write IES, fairies. So babies, flies and fairies. The last another rule is, if the noun is ending in y, जब y में लास्ट हो रहा है और जस्ट आफ्टर अ ववल, और उससे पहले क्या है आपके, ववल है, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ भी है अगर, तो व्हाट विल हैपन, यू विल जस्ट ऐड एस. आप क्या करेंगे, आफ्टर y यू विल ऐड एस. लाइक की, y is here at last and before y vowel is there, so you will just add s at last of the noun. यानी कि आप नाउन के लास्ट में या वर्ड के लास्ट में s ऐड कर देंगे. Like here boys, BOY, y is here and before y vowel is here, so what you will do, BOYS, boys. TOY, again TOYS, toys. Another rule, ending in o preceded by a vowel. तो हम क्या करेंगे, s को ऐड कर देंगे. How? Here I am showing one example, RADIO. So what is here? O is at last and before O I is there. Vowel is there. So what you will do? You will just add s. Like radios, you will add s. Zoo, zoos, s you will add. Last, F or FE. If the noun ends in F or FE, what you will do? You will just add VES. You will remove FE from the word and you will just add VES. Like KNIFE, knife. So you will just remove FE from here, or what you will write? You will write in place of FE, VES. FE की जगह पर और F की जगह पर आप क्या लिखेंगे? VES. तो यहाँ स्पेलिंग क्या हो जाएगी? है KNIVES, knives. WIVES, wives. And now in English grammar, some irregular nouns are also here. In irregular manner is also there. In your book, when we change singular into plural, so some irregular manner are also here, like man. Man को जब हम singular से plural में change करते हैं, when we change man to plural, so what we will do? Man का क्या हो जाता है? MAN, plural में MEN. In place of A, you will write E.
लाइक माउस, माउस में क्या होता है, MOUSE माउस होता है. इन प्लेस ऑफ O you will write MICE mice. Like child, child is singular. If we are talking about one child, child you will write, and if you will talk about more than one child, so you will write children here. So this is irregular manner. We are changing singular into plural. आप सिंगुलर को प्लूरल में कुछ इरेगुलर मतलब अलग से तरीके से चेंज कर रहे हैं. नॉट एडिंग ES, IS, VES, नथिंग यू आर डूइंग, जस्ट ओनली irregular manner is here and you are changing it. And some nouns do not have any plurals. उनके कोई plurals नहीं होते हैं. Like gold, oil, cotton, water, waters नहीं होता, beets नहीं होता, sugars नहीं होता, monies नहीं होता. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल्स नहीं होते हैं. And some nouns do not have singulars since they are always in pairs. वो पहले से ही पेयर्स में होते हैं तो उनके कोई सिंगुलर्स नहीं होते. लाइक वी वेयर ट्राउजर्स, हम ट्राउजर्स पहनते हैं तो आपने देखा होगा दो एक ही पेयर होता है दोनों पैरों का, तो वो क्या होता है, ट्राउजर्स ही बोलते हैं हम उसको. सीजर्स, कैची, उसको हम सीजर नहीं बोलते, वी से ओनली सीजर्स. ठीक है, उनके सिंगुलर्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी सिंगुलर्स. ओके, पैंट्स, वी वेयर पैंट्स ऑल्सो like this. And some nouns do not change while making plurals. और कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हम plural बनाने में भी वो change नहीं होते हैं, as it is रहते हैं. जैसे for example sheep, sheep, plural of sheep, sheep will be there. Hare, hare will be here. Reindeer, reindeer will be there. And deer, you will not say deers. Okay, you will just say in plural also deer. Okay, cattle, cattle will be there in plural also. So this was the noun numbers, and now I am telling you exercise number 3.1. 3.1 you will do in your book only. Circle the plural nouns given in the box. Here, box is there, where so many words are here, and you have to choose or circle the plural nouns. Plurals आपको इसमें circle करने हैं. So cattle, cattle is plural itself. Cattle क्या है? Plural ही है, singular भी same ही है. Cats, cats is also plural. So you will write cattle, plural, cats, plural. ये सब क्या है? प्लूरल फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ नाउन, प्लूरल फॉर्म्स है ये. नाउन्स, यू विल राइट नाउन्स, प्लूरल नाउन्स. लैम्प्स, LAMPS, lamps, lamps also plural. Forks, plural. Feet, feet is plural itself. Dog is singular, we are talking about one dog. Wagon, we are talking about one. Slipper, we are talking about one slipper. Desk, desk we are talking about one, so it will be singular. Trousers, trousers is plural, so what you will write? Trousers. Chair, again chair is singular. Garden, garden is also singular. House is plural. Pony, also singular. Mice, plural. Mouse, mice. Cards, again cards, plural. And glass, singular. Teeth, plural. Tooth, teeth. दांत, ये more than one के लिए है teeth. Now
change the following singular nouns into their plural forms. Up in the next question, what you have to do? You have to write the plural forms of singular nouns. आपको singular का plural में convert करना है, change करना है. So what you will write in the second question? This is the first one, A, and second one, child. Plural of child, children. Children. C-H-I-L-D, child, R-E-N, children. Next, ray. Plural of ray, rays, R-A-Y-S, rays. Because it is lasting or ending in Y, so you have to just write S at last. Colony, C-O-L-O-N-Y, colony. So, what will the plural? Colonies, I-E-S you will add. Wife, F-E is at last, so what you will do? W-I-V-E-S, wives. Cargo, you will just write S at last. It's adding in O, so what you will do? Cargos. Church, C-H-U-R-C-H. So at last C-H is there. So what you will write? C-H-U-R-C-H-E-S, churches. Next, boy, boys. Baby, babies. Box, boxes. It is ending by X. So what you will do? ES you will add. Key, before Y, here vowel is there. So what you will write? You will just add S at last. So here I have told you how to change singular into plural nouns. कि कैसे आप singular को plural में change कर देंगे. So I have told you rules how to change singular into plurals. So today I have told you about noun numbers. When we refer one, noun one, it will be singular. If we will talk about more than one, it will be plural. Plural noun. एक के बारे में जब हम बात करेंगे तब सिंगुलर, एक वचन. If we will talk about more than one, that will be plural, जिसको हम हिंदी में बहुवचन या एक से ज्यादा होने पर हम क्या बोलते हैं? बहुवचन. So what you will do today? Today you will do this work in your grammar book, Keystone book. And if you are not having book, you will write in Fair Grammar notebook. So learn the rules and definition also. So we will meet you soon in our next chapter. Take care. Bye-bye.